हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। हमने हाउ टू यूज़ आर्या रोल्स पढ़ा था। तो आर्या रोल्स को कैसे यूज़ करते हैं वो हमने कुछ हद तक पढ़ लिया था। पहले तो हम थोड़ा सा उसमें से रिवाइज करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। New notification from Windows. ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। Tab panel not selected. Row 4. Radio dash button by area dot A. How to use area role. Grid row 2. How to use area roles row 2. Unknown. Opening dash. Cancel button. How to use area roles left. How to use it Vikings. How to use area roles comma. Properties comma. Might learn how to learn more. Learn check grid help. Close button alt plus. How to use area roles left paren. Page 3 blank. Page 5 relationship attributes. यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। Relationship attributes. These types of attributes help connect to elements that are difficult to otherwise identify using the HTML document tick structure. An example of this type of attribute is the area label FB attribute. This attribute helps connect an input field to a label in a form left paren, but can be used for less obvious relationships right paren, less form greater less label for equals quote name quote ID equals quote name label quote greater name less slash label greater less input type equals quote text quote area label FB equals quote name label quote greater less slash form greater. Other examples of relationship attributes are area colspan comma area controls comma area owns comma area photo comma etc. 5 rules of area use when using area comma. There are some DOS and DOM-TIC TS that must be followed in order to ensure that your site or the project you TIC working on is accessible to users that rely on screen readers and other assistive technologies. These are known as the rules of area use, and they are 5 in number. Area rule number 1. The first rule of area use goes as follows. If you can use a native HTML element or attribute with the semantics and behavior you require already built in comma, instead of repurposing an element and adding an area role comma, state or property to make it accessible comma, then do so. This means it is best to use semantic HTML where it is available as much as possible and not resort to using elements like div in place of button element and adding area roles comma, states comma, or properties to make such elements accessible. There are some instances in which this might not be possible, and they include the feature is currently not available in HTML if the visual design constraints rule out the use of a particular native element because the element cannot be styled as required. When the native HTML element does not have accessibility support. Area rule number 2 page 6. देखिए, पहला क्या है? इफ नेटिव HTML इज नॉट सफिशिएंट, इससे याद रखेंगे इजी लैंग्वेज में। इफ नेटिव HTML इज नॉट सफिशिएंट देन वी विल यूज आर्या रूल स्टेट, मतलब वी विल फॉलो आर्या रूल, वी विल ऐड रोल यानी आर्या रोल, वी विल फॉलो नेटिव HTML इज नॉट सफिशिएंट, देन क्या? वी विल फॉलो आर्या रूल। क्या? कि वी विल यूज करेक्ट रोल स्टेट एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा रूल देखिए। The second rule of area use warns against the changing of native HTML semantics with area roles comma, states comma, or properties. For example, do not do this less nav role equals quote header quote greater less b greater my awesome website less slash b greater less slash nav greater do this less header greater less b greater welcome to my website dot less slash b greater less slash header greater. Area rule number 3. The third. क्या कह रहे हैं? दूसरा रूल ये होना चाहिए कि आप जब भी हेडर यूज़ कर रहे हैं HTML में तो फिर वहाँ पर आप जो है हेडर ही यूज़ कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए कि आप डिव में रोल इज इक्वल टू नेव यूज़ कीजिए, यानी नेव या हेडर में से एक यूज़ कीजिए। तो ये कौन सा लैंडमार्क के अकॉर्डिंग है? ठीक है। The third rule of area use states that all interactive area controls must be accessible via the keyboard. This means that whatever action left paren, drag comma, drop comma, click comma, etc. right paren elements on a page requires to perform an action comma, users must also be able to perform the equivalent using just the keyboard. An example of this would be submitting a form using a button. A user must be able to submit the form by clicking on the enter or return button comma, which must also be capable of receiving focus. Area rule number 4. देखिए, एरिया रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। थर्ड क्या है कि जो भी हमारा
ड्रैग ड्रॉप डाउन रूल है, या तो अगर हम कहीं पे क्लिक करते हैं उस फंक्शनलिटी पर, तो वो हमारा काम सक्सेसफुली होना चाहिए। जैसे फॉर्म सबमिट का एग्जाम्पल है, ठीक। The fourth rule of area use warns against the use of the role attribute with presentation and area dash hidden equals tick ठीक true है, tick on elements that are visible and focusable to the user. Dot doing either of these would result in the user focusing on nothing in the end. Dot only use area dash hidden equals tick true tick on elements that aren't tick T visible or cannot be interacted with left parent but are interactive right parent. Dot area rule number 5 the fifth. क्या है कि रोल इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन, रोल इज इक्वल टू हिडन, और आर्या डैश हिडन, सॉरी, हाँ, आर्या डैश हिडन, रोल इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन, और रोल इज इक्वल टू नन। ये आप यूज मत करें जब तक जरूरी नहीं है। फिफ्थ रूल, Page 6 the fifth and final rule of area use states that all interactive elements must have accessible names, comma, I.E the name of a user interface element. Dot. Take this example, colon, less labeled greater email less slash labeled greater less input type equals quote email quote slash greater. Page 7 this is wrong because assistive technologies would not be able to connect the label value to the input field and its users would also struggle to understand that the field is meant for their email address. Dot. Instead, comma, do either of the following semi, less label for equals quote email quote greater email less slash label greater less input type equals quote email quote name equals quote email quote ID equals quote email quote greater or less label greater email less input type equals quote email quote greater less slash label greater. You now understand area ban. This introduction has given you a basic knowledge of Area. Next time you tick rewriting HTML or JavaScript, think about whether Area would improve what you tick be built and help those with accessibility impairments. And don't tick T forget the 5 rules of using Area roles, comma, properties, comma, and state span. More accessibility tutorials. Accessibility is an oft-overlooked but essential part of web development. Sami Kadonantik's article about its importance will motivate you to think about web accessibility more, colon. Blank. Blank. क्या कहा? डोंट फॉरगेट टू 5 रूल्स ऑफ आर्या, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज वेब डेवलपमेंट। तो ये आखिर में कहा। फिफ्थ रूल क्या है कि यूज एक्सेसिबल नेम ऑल्सो फॉर द वेब डेवलपमेंट पर्पस एंड फॉर द इजी टू अंडरस्टैंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर्स। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ का नेम या कोई एलिमेंट यूज़ करते हैं, कोई भी उसका नाम है, कुछ भी है एलिमेंट, तो उसका जो नेम है वो वेब कंटेंट में जो भी आप देना चाह रहे हैं, तो उस पेज पर वो विजुअली भी होना चाहिए, वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी से एक्सेस भी होना चाहिए ताकि स्क्रीन रीडर पढ़ के सुनाए। यानी कि वो HTML के साथ साथ आर्या से भी होना चाहिए, CSS से ही टोटल इम्प्लीमेंट ना हो, यानी विजुअलाइज भी हो, और साथ के साथ वो आर्या के थ्रू आप क्या करें, जैसे बटन का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, आर्या के थ्रू आप उसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाएं ताकि जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़र्स हैं वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी को ब्राउज़र इंडिकेशन कर दे और वो यूज़र्स को उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो परसीव करवा सकें, पहुंचा सकें, उनके लिए इजी टू ऑपरेट बना सकें। तो लास्ट में कहा है डोंट फॉरगेट टू 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्या रूल्स। तो ये हो गया आज आपका ट्यूटोरियल। Area dash programs window items new list how to use area roles row 2 column 540 of 56. ठीक है, ये हो गया आज का ट्यूटोरियल। यहाँ पर दूसरा एक और प्रोग्राम करते हैं, ये आज के लिए सफिशिएंट है, कल के लिए एक और करते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आज मैंने इसको हाउ टू यूज़ आर्या रूल्स इसको कंप्लीट कर दिया है। आई होप सो बहुत अच्छी नॉलेज आपको डिलीवर हो गई होगी। जो कल प्रोग्राम करेंगे वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, आपको नाम बता देती हूँ। How to use area roles row 2 landmark row 3 column 141 of 56. लैंडमार्क कैसे बनाते हैं पेज पर, उसके बारे में प्रैक्टिकली बताऊंगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।